कहाँ गया रिकॉर्ड? सर आपकी नौकरी पे बना थी अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो, नौकरी पे बना थी अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो। सर 2011 में एक बार ढूंढी गया था, तो उससे क्या होता है? उसमें निजी भवन में कई बार ट्रांसफर हुआ, तो वो 2011 में नहीं मिला था। अभी भी हम लोगों ने पूरा ढूंढा। आपने FIR दर्ज करी 2011 में, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, रिकॉर्ड गुम गया, तो DC कहाँ है आज की तारीख में? रिटायर हो गए होंगे। जी सर। ये है नौकरी में? नहीं सर, रिटायर हो गए। फिर अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी आप तो नौकरी में है, कितनी नौकरी बची है आपकी? 5 साल लगे। हाँ, तो अब आपके खिलाफ तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। सर हमने तो जितने डॉक्यूमेंट थे सब हमें नहीं मालूम ढूंढा। इसमें कहाँ लिखा है कि आपने क्या प्रयास किया ढूंढने का। एंड ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जिसमें अपॉइंटमेंट जैसी महत्वपूर्ण चीज है, कैसे गायब हो जाता है? The petitioner as well as the result of the selection proceeding null. हो गया रिकॉर्ड आगे। My lord, the record in respect of the appointment of the petitioner is available, my lord. Insofar as the record of the selection of the 1987, my lord, that is not traceable, my lord. We have filed an affidavit. The corresponding corroborating documents are available, which we have placed on record. But that 87 selection record is. कब एलिमिनेट हुआ वो रिकॉर्ड सिलेक्शन का 87 का? में तो नियम है ना डॉक्यूमेंट्स एलिमिनेट करने के लिए। सर 30 साल में किस नियम में कब एलिमिनेट हुआ वो बताइए। सर मैंने एक एक्सप्लेनेशन फाइल किया है सर। But this was filed on 14/3, my lord, white document number. तो आता ही नहीं है आपका, 15/3 है। 14/3 को फाइल हुआ, 13/3 को। आई एम सॉरी सर, 14/3 को फाइल, कल परमिशन लेके फाइल। क्या कर सकते हैं? Of excise constable and failure of the petitioner in two selection process gets substantiated from the letters written by the petitioner himself. क्या लिखा है? 87 का रिकॉर्ड किस प्रावधान में एलिमिनेट हुआ? नहीं, एलिमिनेट नहीं हुआ, नहीं लिखा सर, ट्रेसेबल नहीं है सर। तो ट्रेसेबल नहीं है कैसे? सरकार में हम कल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी देख रहे थे, जो भी चीज आपको इनकन्वीनियंट होती है वो ट्रेसेबल नहीं होती है। 87 का है सर। क्या हो गया? सरकार के पास तो अंग्रेजों के जमाने के 1857 के भी डॉक्यूमेंट। आई एग्री my lord, I cannot dispute that my lord. या तो आप ये बताइए कि आपने किसी रूल के अंतर्गत इनको एलिमिनेट किया है, तो वो रूल्स पेश करिए, एलिमिनेशन का रजिस्टर पेश करिए, और नहीं डॉक्यूमेंट्स पेश करिए। अदरवाइज एडवर्स इन्फ्लुएंस इज टू बी ड्रॉन अगेंस्ट यू। हैव यू डिपॉजिटेड द कॉस्ट? No, we have deposited. हाँ, You have deposited my lord. If your lordships may kindly have the my lord, if this is the case my lord, में kindly 2 मिनट में अगर वो तो 2 मिनट बाद में मैरिज पे बाद में जाएंगे। पहली चीज ये है कि कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट। my lord we have Can you simply say that it has been misplaced? my lord in Where it is mentioned that it has been misplaced? my lord 2 places we have stated my lord. Paragraph 6 to 6 my lord. पैराग्राफ 6 पे से एक बताइए कहाँ लिखा The है? answer respondent most respectfully submits that in spite of best efforts being made, the records of the physical examination which took place on so and so at divisional level Sagar are not traceable. How they are not traceable? Because when bungling takes place, then records are manipulated. They are not made available to the court because you don't want court to see the records. सर एक छोटा सा निवेदन सर, इसमें 2011 की ही चिट्ठी लगी है कोर्ट में, तो ये पहली बार 2016 में आए सर। 11 से ही उसको जो कंसर्न अथॉरिटी थी मिलॉट, दिस वाज द केस। Concerned with the merits, you may be right. I am not disputing. I am not forming any opinion against you. Well, You may be right. He may have been disqualified on his own merits, but you are required to produce that record. और para 13 It is not the opinion of the court that you inappropriately disqualified him. But record is to be produced. You yourself admit in this that on the basis of some communication of 2011, वो लाया हूँ सर। हाँ ठीक है लाए होंगे आप, लेकिन वो कम्युनिकेशन जो है उसकी जो फाउंडेशन है वो तो जब तक नहीं होगी, फाउंडेशन के ऊपर हम बिल्डिंग में क्या करेंगे? That corroborative material is available my lord, the original record अभी नहीं मिला। You will have to bring it. You will have to bring it. Otherwise, action will be taken against the person concerned. अभी 25,000 कॉस्ट लगी है और कॉस्ट लगाऊंगा, 1 लाख लगाऊंगा, 2 लाख, 5 लाख. You will have to produce the record. Otherwise, terminate that employee who is responsible for misplacement of these records. Lord, we'll hold an inquiry. Where it is mentioned in this? No, we have not mentioned my lord, we have requested the court to. 87 से अभी तक तो रिटायर हो गया, अब आप क्या इंक्वायरी करेंगे? That's the issue. Rules आपको भी मालूम है. That's the issue my lord. 87 का रिकॉर्ड है my lord. इसमें तो क्रिमिनल केस रजिस्टर होगा. कमिश्नर को बोलिए पर्सनल एफिडेविट फाइल करने के लिए मैंने कहा था। नहीं, उनका मैंने आईए के साथ फाइल किया है, इसमें ओआईसी का फाइल किया। हाँ, क्या है आईए के साथ? आईए में हमने सर
कॉस्ट जमा करी है वो फाइल तो की ठीक है, ऑर्डर क्या कहती है? जी Of the order then ये फाइल अपॉइंटमेंट की घूम जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? ट्रेसेबल नहीं हो पा रही सर, मैं फिर से ढूंढवा ऐसा कैसे हो जाता है, हम ये तो समझना चाहते हैं। जो भी चीज आपको इनकन्वीनियंट होती है वो अनट्रेसेबल हो जाती है। Ask your commissioner to remain present. Not the deputy commissioner is there, my No, lord. no, I'm not interested in deputy commissioner. Is he the custodian of the records? Is he responsible? Not in Ask fact, your commissioner to remain present and explain that what efforts were made. may I, my lord. No, He there is no mention, there is no whisper that what efforts were made by you to trace the record. बताइए, पढ़ के बताइए इसमें से. My lord, we have stated, my lord, You are that is clearly saying that is not sufficient. You are required to point out what efforts were made by the concerned authorities to trace the record. सागर का रिकॉर्ड है my lord. सागर क्या मध्य प्रदेश के बाहर है? नहीं, मेरा निवेदन ये सर कि सागर का डिप्टी कमिश्नर जो जिसको रिकॉर्ड रखना हमें मतलब नहीं है. he is there, my lord. He may be there. कहाँ है बुलाइए. Where is he? कहाँ गया रिकॉर्ड? सर आपकी नौकरी पे बना थी अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो. सर 2011 में एक बार ढूंढी गया था, तो उससे क्या होता है? उसमें निजी भवन में कई बार ट्रांसफर हुआ, तो वो 2011 में नहीं मिला था. अभी भी हम लोगों ने पूरा ढूंढा. आपने FIR दर्ज करी 2011 में, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, रिकॉर्ड गुम गया. 2011 में जो डीसी थे उन्होंने तो नहीं ऐसा किया था. वो डीसी कहाँ है आज की तारीख में? रिटायर हो गए होंगे जी सर. कि है नौकरी में? नहीं सर, रिटायर हो गए. फिर अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी. अभी आप तो नौकरी में है, कितनी नौकरी बची है आपकी? 5 साल लगे. हाँ, तो अब आपके खिलाफ तो हम कार्रवाई कर सकते हैं. सर हमने तो जितने डॉक्यूमेंट थे सब हमें नहीं मालूम ढूंढा. इसमें कहाँ लिखा है कि आपने क्या प्रयास किया ढूंढने का. एंड ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जिसमें अपॉइंटमेंट जैसी महत्वपूर्ण चीज है, कैसे गायब हो जाता है? इससे सिर्फ इतना प्रतीत होता है कि आपके यहाँ लाल पीता शाही है. आप कुछ भी काला पीला करते हैं और जब कोर्ट रिकॉर्ड बुलाता है तो वो रिकॉर्ड जानबूझ के प्रस्तुत नहीं करते. I'll record this finding against you. I'm giving you one more opportunity to produce the record. Otherwise, there will be a finding against you, and consequences will be very adverse. But one opportunity may kindly. I'm ready to pay. I'll not condemn anybody without giving proper opportunity. आपको एक दे दी, एक opportunity और दे रहा हूँ. सर ऑफिस में जितने डॉक्यूमेंट थे उसको ढूंढ लिया सर. हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो दूसरे ऑफिस जाके वहां जाके देखिए. आप, आपका कमिश्नर मोती महल में बैठता है ना, जी सर. वहां जाके ढूंढिए. हमें My lord, my lord, I'll take. My lord, 4 weeks time may kindly be granted. 4 weeks time I'll grant you. देखिए, श्री विपिन यादव, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. श्री उनको बोलिए यहीं खड़े रहेंगे अभी. जा साहब. Shri Amit Seth, learned Deputy Advocate General for the state, along with Shri प्रमोद कुमार झा, Deputy Commissioner Excise, सागर डिवीजन. Sagar Division, Sagar. Next back. A cryptic additional submission has been filed by the respondents dated 13/3/2023 on 14/3/2023. In para 6 of this affidavit of para 6 of the additional submissions supported with an affidavit of one Shri Chandra Prakash Savle, in charge Assistant Commissioner Excise Sagar, it is mentioned that in spite of this efforts being made, records of the physical examination which took place on 21/3/1987 at divisional level Sagar are not traceable. Full stop. It is mentioned that this fact gets substantiated from the communication dated 27/8/2011 issued by the Divisional Commissioner Excise Sagar. Full stop. Shri Jha, present in person, admits that no FIR was lodged about misplacement of the record or
of misappropriation of the concerned record. Full stop. There is no whisper in the additional submissions as to what efforts were made by the authorities to trace the record, but Shri Jha submits that they have seen each and every paper available in the office of Deputy Commissioner, Excise, Sagar Division, Sagar. Full stop. This oral submission is not sufficient. Full stop. Matter pertains to recruitment. Full stop. There is no material on record that, as per the rules, said record of selection was eliminated. Full stop. Therefore, record is bound to be produced by the respondents. Their failure will have natural consequence of drawing a adverse inference against the respondents. Full stop. Respondents cannot be permitted to cover up their lapses by saying that record is misplaced without there being any substantial material to show the steps taken by them. Full stop. Shri Jha admits that the Divisional Commissioner Excise, Sagar, who had for the first time mentioned in the year 2011 that records were misplaced, had not taken any steps to lodge the. He admits that the then incumbent to the post of Deputy Commissioner stands retired. Full stop. Thus, this practice of covering up the lapses, not producing the documents in the court where allegations are made of tampering, of playing fraud with the selection, and it is necessary that documents are produced so to maintain confidence of the public in the government authorities, by way of last indulgence and on request of Shri Amit Seth, 4 weeks' time is granted to produce the proceedings which took place on 21/3/1987 at divisional level, in which Commissioner Excise shall remain personally present. Copy in the list on 19 अप्रैल 2019 नहीं करी, हाँ 18 अप्रैल 2023। श्री हिमांशु शुक्ला 3.1, श्री कबीर पाल